शरद पवार केवल स्टेटमेंट ने कहा है कि राहुल से गठबंधन टूट गया है। आराम से जीरो कम। गठबंधन टूट गया नहीं, हमारे वजह से नहीं, ना मेरे वजह से, ना राहुल की वजह से, ना कांग्रेस पार्टी की वजह से। और नरेंद्र मोदी's visits, मैम how do you see that? यार प्रदीप क्या करती है यहाँ बाइट दे रही थी हो यार। All right, that's a highly miffed Sonia Gandhi there, who has just spoken out on a Headlines Today exclusive, where we told you that Sharad Pawar, speaking to the TVTN network, had blamed Rahul Gandhi for the split with the Congress ahead of assembly elections in Maharashtra. The Congress and the NCP had been in power in the state for the last 15 years, and the breakup is being seen as Pawar's attempt to jump out of a sinking ship. The NCP chief spoke to Headlines Today's Sahil Joshi in this exclusive interview that Sonia Gandhi has just reacted to. Sonia Gandhi there saying that neither she nor her party nor her son should be blamed for the split between NCP and Congress in the state of Maharashtra. कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में और खास तौर पर यंगर लीडरशिप में एक कॉन्शियस थिंकिंग था कि अपनी पार्टी मजबूत करो, इसमें कोई गलत नहीं है। और अपनी पार्टी मजबूत करो तो अपने साथ जो है उनको मार्जिनलाइज करो। राहुल गांधी हो, उनके साथ बैठने वाले कई नौजवान पार्लियामेंट के मेंबर थे कि हमारे साथ कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे, ऐसे एक टीम थी वहाँ। इन लोगों का एक फीलिंग था, कुछ लोगों ने वैसे बात भी की थी कि भाई हमें कांग्रेस को मजबूत करनी है। कांग्रेस की विचारधारा के आसपास रहने वाली दूसरी कोई विचारधारा हो, वो जब तक रहेगी तब तक कांग्रेस को शक्ति नहीं मिल सकती। और इसलिए इन फोर्सेस को दूर करना चाहिए, मार्जिनलाइज करना चाहिए। तब से हम लोगों ने भी आपस में सोचने की प्रक्रिया शुरू की और इसका अल्टीमेट ये डिसीजन है। पहले किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई समस्या पैदा होने, उनको मार्जिनलाइज करने की उनकी जो कोशिश थी, हाँ वो कोशिश अपनी पार्टी, अपनी इमेज, अपनी लीडरशिप मजबूत करनी, मगर कोalition की ताकत हाथ में लेकर अपने साथियों को इस तरह से मार्जिनलाइज करना हमने विलासराव देशमुख या सुशील कुमार शिंदे या अशोक चौहान के ज़माने में देखा नहीं। करार में कांग्रेस के कैंडिडेट को जो यशवंत राव जी के खास सहयोगी थे उनको भी डिफीट करने का काम मैंने जो कैंडिडेट एक छोटा आदमी खड़ा करके भी गया था, करार के लोगों ने उसको सहयोग दे दिया और 3 लाख वोटों से पृथ्वीराज को डिफीट किया। इसने किया, ये बात इनके दिल को लगी है, ये थे वो भूले गए नहीं। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो या मनमोहन सिंह हो, यूएस रिलेशंस के बारे में उन्होंने हिंदुस्तान की एक इज्जत बढ़ाने के लिए हमेशा मेहनत की। आई थिंक मनमोहन सिंह, क्योंकि मैं इनके साथ काम करता था, कई बार अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ जब मीटिंग हो गई मनमोहन सिंह की तो मैं भी इनके साथ था, तो मैंने देखा है। तो मनमोहन सिंह का बारे में अमेरिकन लीडरशिप में कितना कॉन्फिडेंस था। इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू उस ज़माने में स्थिति थोड़ी अलग थी। सोवियत रशिया एक दूसरा अल्टरनेटिव एक सेंटर था पावर का, हमारे रिश्ते भी इनके अच्छे थे, इसलिए अमेरिकन का एक अप्रोच इनके बारे में अलग था। जब नरेंद्र मोदी आ गए तब ये सब स्थिति में बदलाव आ गया, टोटल प्रो अमेरिकन अप्रोच रहा और इसलिए अमेरिका का एक अप्रोच इनके बारे में अलग हो सकता है। और पंडित जी गए, इंदिरा जी कई बार गया, राजीव गांधी गए या मनमोहन सिंह गए, उन्होंने उनकी विजिट देश के लिए कैसे अच्छी हो सकती है इस पर ध्यान दे दिया। वहाँ उन्होंने मार्केटिंग नहीं किया। इस बात का स्वीकार करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी बड़ा इफेक्टिव विजिट का मार्केटिंग करने में कामयाब हो गए। राजनीति में जो आता है उसको कभी न कभी लगता है ना कि कभी लगता है कि मैं एमएलए बनूँ, एमएलए को लगता है मिनिस्टर बनूँ, मिनिस्टर को बनूँ सीनियर मिनिस्टर बनूँ, अच्छा पोर्टफोलियो, बाद में ये मिलने के बाद कभी तो मुझे सीएम का मौका मिलना चाहिए। अभी 25 साल 30 साल होने के बाद ये मौका नहीं मिलेगा, यानी इस तरह का फीलिंग होगा तो इसमें गलत क्या है।
He did not cause the split. Well, that's not the only voice coming from the Congress as we speak. The Congress has hit back after Sharad Pawar's attack on Rahul Gandhi. In its first reaction, the Congress has said that the attack on Rahul Gandhi is unfair. As far as your former ally NCP is concerned, Mr. Sharad Pawar has said that Rahul Gandhi marginalizes the allies, and it is because of him primarily that the alliance did not go through. Well, I can't, I'm not party to that decision, and I don't have inside knowledge and information, but I will say one thing, that Mr. Rahul Gandhi has a very explicit determination to ensure that the Congress party remains strong and a driving force. Now, when somebody is so determined and so singularly committed to an idea of primacy and dominance of the party, maybe other people don't understand it, and I think they need to engage in a greater dialogue to understand what our objectives are. After all, we were singularly minded about not going into alliances when we went to Simla. In Simla, we agreed that we would look at alliances and the possibility of alliances, and thereafter we looked at alliances in 2 long terms, 5 years and 5 years. We have worked at the center in alliances which sometimes were running into trouble, but by and large I think we've done a good job. But I don't think that the alliances have to force you to redefine yourself. They certainly encourage accommodation and require accommodation and adjustment, but you can't redefine your core principles and your core objectives of your own party. And I think it would not really be very fair to say that Mr. Rahul Gandhi's determination to keep his party as number one and to move forward faster and greater and to have a historical perspective from the past informing the kind of party he wants to see ourselves be part of in the future. I don't think it's fair to comment on that if you're not within the party. And Mumbai Bureau Chief Sahil Joshi now joins me live. Sahil, you got this explosive interview from Sharad Pawar, to which even Sonia Gandhi has now reacted. But clearly, when it comes to the Congress, this is the sharpest attack by Sharad Pawar singularly on Rahul Gandhi. Interestingly, this is what is happening today during Maharashtra elections campaign, because it was thought that Congress NCP will attack Shiv Sena, BJP or Modi or any other BJP leader, but whereas the Congress is attacking NCP and NCP is attacking Congress, Sena is attacking BJP and BJP is attacking Sena. Now, this is for the first time Sharad Pawar has clearly taken name of Rahul Gandhi. Earlier he used to make comments about Rahul Gandhi's decision, but without taking his name. But now he has clearly mentioned that Rahul and his team are responsible for what has happened today with the alliance partners. He clearly mentioned that Rahul Gandhi and his team were trying to marginalize the allies who have come from the same thought of political thought as that of Congress, and because of that there was no choice for NCP than to split away from Congress. Now it's obvious for Sonia Gandhi to come out and in support of Rahul Gandhi and making it clear that the split did not happen because of the Congress, it happened because of NCP, because of the timing of the split. Immediately after half an hour, NCP declares that they are not going to go ahead with the alliance with Congress, blaming Congress that they did not come up with any solution, any formula for NCP's demand of seats. So it has become very interesting, and it looks like that is going to be the agenda for NCP, to blame Congress for the split, to ask the voters to vote them because they could not perform well, because they were in the alliance. Rather than that, if they are going not with the alliance, they will be performing better. That's what is the line which NCP is going to take at this point of time. Well, speaking of Sharad Pawar, here's a quick reminder for our viewers. At 3:30, we're going to play out that entire exclusive interview between Sahil Joshi and Sharad Pawar for our viewers, to which Sonia Gandhi and Rahul Gandhi have now reacted. Sahil, we'll keep coming back to you for more.